Now let's start the recording. So you can see here in this website there is a lab 1. Under the heading of lab 1 you can see all the videos also available, but the main thing is download all PG labs data. So everything which I will we will study, all data I will put in this folder. I will save in this folder, okay, only one folder, Google Drive. If I will open it, for example, here you can see lab 1 intro. All the data of lab 1 is saved in this folder. And then again lab 2, today's lab is the lab 2 hydro turbine, that is Francis turbine. So lab 2 Francis, this is the title of the folder. And you can see here that all the data, when you will click it here, you can download it, and you can see here that lab 2 Francis data is available here. And similarly evaluation. So every time, for example, here the Excel sheet is there, and you can see in the Excel sheet, you can see here that the red line, the red column shows that absentees, number of absentees. So I have put the formula in Excel sheet. So every week you can see how many students are absent. Okay, for example, here you can see two absentees. This is the second lab, and some students have two absentees. Okay, so you have to keep it in mind that over 4 absentees, number of absentees. So for fifth, I think so, absentees. So you have to chairman will allow. Okay. So this time in this fall session, the higher authority has applied the strict rules regarding the attendance. Okay. So there is no problem for me. For example, you cannot take the lab in this lab. For example, Friday first time, you can take in the second time. For example, if for genuine reason, okay. So but for this same week, okay, for example, this week we are discussing lab 2 Francis turbine. So we have 4 sessions. So for example, now you have the fall, you have any problem, it's natural, you have the problem, so no problem. If you have the problem, you can 4 sessions, you can join any session, so attendance will be there. So like that you can we can compensate, but attendance you have to take care. Okay. So in the start we will just, for example, lab manuals, will check the lab manuals, so that any person who have missed this chance, so we'll check in the end after 16 weeks. Okay. In 16 week or 15th week. Okay. So this is what the scenario, and you can see here in the Excel file, every time in the end students ask me that please explain what's the grading criteria. So now I have already mentioned the grading criteria in this Excel sheet, and you can see every column is mentioned. And if you have some know-how about the Excel sheet formulas, Excel file formulas, you can see every formula is mentioned here, but I will explain it a little bit. For example, here you can see lab 1, CLO1, CLO2 and CLO1, the mapping is there. And I also highlighted the, you can see highlighted the columns, and the, you can see here the overall, the total grading criteria. For example, it is yellow mean in lab 1 2 3, the yellow column will you can see contribute to this column. This is, for example, yellow column, this is the total labs 1 to 14, and it is contributed CLO1 PLO4. For example, this is yellow column in Excel file. You can see here Excel file I will also share, because I already uploaded in the website, but for your convenience you can see here I am also sharing it with Azim, and Azim will share right now with you, so that you can open it, so that you can see it. Otherwise maybe, yes, please open this file, Excel file. Okay. So now it will be easy for you to understand. Okay. So in the end, there is no need to explain this grading criteria, because I already explaining it right now. Okay. So shared, everyone open? Not? No? Achha, okay. Open. Achha. Now you can see here that here the number of absentees. Number of absentees is actually, you can see here. Now, Zim, you can circulate the attendance. Okay. Circulate the attendance. Okay. And in the end, I will check. Will enter the attendance. So now here you can see. For example, in this Excel sheet, you can see if you will miss the chance of, for example, you know you are present here, but I will ask one question about this today's session. In the end, I will evaluation, you can see I will ask one question. This is a tradition we have started right now in this. वन एबसेंटिंग का मतलब है एक एबसेंट हो गई। हाँ, दो का मतलब दो हो गई। अच्छा, आपकी आज की नहीं हुई होगी। मैंने 2 लैब का डाटा डाला है ना, आज शाम तक जो है ना, जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आपका चूंकि इतना एंटर नहीं हुआ ना आज का, व्हेन आई विल एंटर टुडेज अटेंडेंस,
So you can see here you will reduce it to 1, okay, 1 minus, okay. So ये दो का फार्मूला मैंने लगाया अभी लैब 1 और लैब 2 का. तो जिनकी दो लैब्स हो चुकी हैं उनका ये डाटा इज एक्यूरेट, but those whose single lab, for example today's lab, is missing number of absentees, data is not accurate. अच्छा ये हो गया. उसके बाद देखें आप, you can see here that the yellow column is lab performance 1. So lab performance 1, lab 1 to 14, we will cover 40 labs, approximately 40 labs, okay, maybe less more possible, okay, but lab 14 is agenda. And in lab 15 16 CEP, complex engineering problem, okay, complex engineering problem. I will discuss complex you will be assigned complex engineering problem CEP in 14th week, okay. So you can complete it in last 3 weeks, okay. So you can see but I will start the complex engineering problem allocation right now. For example, today I have two proposals I will discuss with you. If you are willing, for example, 4 member in a group is enough, I think so. क्यों जी? 4 member in a group is enough. So if for example if these two today's proposal, if for example any of your group is willing to adopt this proposal, so you can tell me and I will update your names in this Excel file, okay. So for example, I will highlight your I will highlight your 4 names with one color, and in the end I will fill one box with same color, and I will write the proposal CEP name. So it is assigned to you. No other person, no other students, or no other group will be assigned the same CEP. Okay. So in this way, today I have two proposals. I will discuss with you. Anyone willing, tell me. First come first serve. If for example you are agree, okay, this is okay for me, just tell me, and also tell me the members during this lab session, okay. Otherwise next lab. So no need to text me during off hours, okay. In the labs you can tell me, I will update, okay. So because Excel file open easy for me, okay. So this is okay. Now you can see here, for example, yeah, for example this column lab performance 1, lab 1 to 14. This is CLO1, PLO. CLOs we already discussed in first lecture. If anyone missed that chance, you can listen the recording. Lab performance 1 is lab 1 to 14, and you can see his this is CLO1, PLO4, and P3. We will evaluate this one. PLO4 is actually क्या है जी? PLO4 इंजीनियरिंग नॉलेज है ना, इंजीनियरिंग नॉलेज ही है ना PLO4. PLO4 क्या है बड़ा है? हाँ इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. आपका नाम क्या है? सोनिया. देखे ना ये, अच्छा वो लिखा हुआ. बड़े तेज है यार. अच्छा, इसके लिए भी कॉमन सेंस चाहिए. अच्छा अब मुझे ये बताएं कि CLO1, PLO4 and P3, you can see this one column is yellow, and now this yellow column you can see in lab 1 2 3 up to 14. First column of lab, every lab is yellow. All that yellow columns will add to this column, okay. 5 marks for each column, and you can see here this is just how to fill this column. I will in the end of every session I will ask one question to you, like the last lab I asked you one question. I will ask one question in 5 marks I will evaluate right now on your attendance. So for example, if you will answer correctly 5, if you answer half, partially 4, if you don't answer 2. So this is we have set the criteria. If even you don't answer, 2 marks is allocated. Okay. So this is the criteria, and because you are present, because this column also I have a number of absentees is taken from this column. So if you are present, 2 marks is okay. This 2 marks will show that you are not absent, okay. So number of absentees you can avoid like this, and this is yellow column. So you can see 14 marks, 14 labs multiplied by 5 for each lab, 70 marks. You can see this column is 70 marks. This K column, you can see K column, K in Excel. So this is 70 marks, and you can see, okay. Now the next one is lab performance 1, lab 1 to 14, the same, but CLO2, that was CLO1, now CLO2, PLO5. PLO5 is actually
Modern tool usage. So for the modern tool usage, you can see in every lab, the center, every lab has three columns. So the center one is actually this one, PLO5, P3, and this is actually again the question. I will ask you question about tools. That question, the first one column was about the question about overall what we are discussing. So this is the investigation. What we are discussing, I will ask this theoretical question to you about these practical things. So that is theoretical question. You can say, and then PLO5 is actually purely from tools. For example, we use, for example, this tool. I will ask you any question related to this tool, whether you understand this tool, how this tool function. This is something like PLO5, a modern tool usage. So, but due to the shortage of time, sometimes I will ask one question only. So I will fill both columns with one question. ठीक है? I will also give you one chance. For example, your kata cross, so no problem. You can have one more chance. You can ask me that, sir. I ask me another question. Again, I will ask you question. Still kata, no third option. Okay, like that. So this is, you can see all PLO5 columns in 14 labs. You can see again contributed 5 marks each column. 14 multiplied by 5 again 70. You can see this color 17. The second you can say this data I will I have to add in the MCS or online result card. This 4 columns you can see. So again, next column is lab report 1. So lab report 1 is 1 to 7, and lab report 2 is actually lab 8 to 14. So half, first 7 lab reports manuals is CLO1, and second phase, you can say second last 7 weeks is CLO2. So you can see here, this is CLO1, lab 1 to 7, PLO10. Now we are evaluating PLO10. PLO10 is actually communication. So communication is actually a report writing, something, ability to communicate orally and something like that. So this is communication through paper. You can see presentation. You can see what you have written. Today I ignored all of you because only few students maybe have good report, but remaining is just Guzara. So you can try to you can say do something more effort on your reports. Okay, in the end I will also again evaluate. So maybe in this report column, maybe now you have 5 marks. In the end I will again evaluate, maybe your marks will be 4, so we can decrease it. And also, for example, in the end, so something we will also encourage you in the end also, and also with the timely you are submitting, we will not discourage you, we will also encourage me. It will also contribute it, but in the end we also see it. So the combined effect we will write in the column. Okay. अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर ये कॉलम हो गया हमारा लैब रिपोर्ट 1. सो दिस कॉलम यू कैन सी फर्स्ट 7 labs. So it means 7 multiplied by 5, 35 marks. Okay. Now this last column is lab report 2. This is lab 8 to 14, and you can see is this is CLO2. Again PLO is 10, but CLO2 A2. So here you can see again 35 marks. So last lab. So you can see here, and now the first 3 columns you can see have something data of yours. Okay, but the fourth column has 0 0, because in the 8th week this column will be we will start filling this column. Okay, because after from 8th to onward 8th to onward the data will be collected in this column. So now all these 4 columns, how to what is the grading criteria? Lab performance is 20 marks, 10 marks is lab reports. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये देखें ना, लैब परफॉर्मेंस के 70 एंड 70 140 मार्क्स. सो 140 मार्क्स का हमने 20% निकालना है. तो 140 मार्क्स आर द टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 0.21 0.20 20%. So 20% you can see from this column, from these 2 columns, and then lab reports again 2 columns, 35 35 70. So 70 multiplied by मतलब 70 मार्क्स टोटल है, इसका हमने 10 मार्क्स लेने हैं इसे, समझ रहे हैं ना. तो 70 ये टोटल मार्क्स, मैंने एक्सेल में यही फार्मूला लगाया, 70 टोटल डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 10. सादा सा फार्मूला.
तो उससे 10 मार्क्स यानी जिसके 70 आएंगे दे विल गेट द 10 मार्क्स ओके so 10 marks here lab performance 30 marks 20 marks so total 30 marks so total 30 marks data you can see in the total column you can see lab performance 20 lab report 10 final is 50 final viva and demo in the end we again all the labs will ask questions something like that so that 50 marks and in that 50 marks maybe number of absentees for example if students are those students who have presence more no absentee so I will add 15 marks in that 50 final viva and demo 50 marks so I will add 15 marks from attendance so maybe if you don't so if you are punctual so you will get this grade as well okay for example 15 marks in the attendance will in the final 50 solid marks so remaining will ask questions and viva and demo like that and also in the final 50 marks 15 marks is attendance and also 5 marks we will add some students who are performing extraordinary for example some students who are just so I will ask 5 marks like that okay so just to compensate you so like that we can see and cep complex engineering problem is 20 marks okay so cep today I will assign two cps anyone can select that one if you are willing so like that so this is the Excel sheet, okay? Now, as far as the CP is concerned, so for CP today we have the experiment on Francis turbine, and one CP is related to this Francis turbine experiment, okay? These are the practical demonstration. You can see here. This one is the paper. This is the paper base paper anyone this is I am discussing first cep okay first complex engineering problem I am discussing first complex engineering problem if you are willing four members in a group you can decide by yourself and then you can inform me first come first serve for example this cep you want to select this cep just tell me right now or in the end of the today's session or in the so anyone who will tell me first that CP will be assigned to that person. Okay, that's it. So this CP, what's the importance of this CP? Because this is the experiment. For example, experimental analysis. This is the paper published in 2018. You can see International Journal of Mechanical Engineering and Technology, and you can see here that experimental analysis of Francis turbine at full load to determine the performance characteristic curves. So performance characteristic curves we want to find out. So today, our today's agenda is also to see the performance curve, but we will only take one performance curve because today's session is in this session only we can take one performance curve. Okay, is enough. Lab session is done. But as far as the CP is concerned, so you will take more data, more experiments on that workbench on the Francis turbine. Okay, for example, one parameter constant. Today, for example, we will fix the one parameter and we'll change the second parameter and we'll take the results. Enough. Done. Our today's lab session is done. But as far as the CP is concerned, you can okay fix this parameter, change this parameter, results are there, graph is there. Again, no, again change this parameter and then take the results. Okay. Third parameter again change the third parameter, see the impact. So there are the different multiple performance curves you can draw. So this is CP, not difficult. So also you can see the motivation is that this is the journal base paper I have found this by chance I have found this base paper. So you can you have the everything you can follow this paper just to write the CEP report. Okay, and I will also guide you. For example, we will not fully 100% follow this paper. We will, because our scenario is different. For example, our Francis turbine workbench is different. So environment is different. Maybe one data which this paper has recorded, we don't have the provision. So no problem. I will guide you that okay, no problem. This one you can take this parameter. This. I will guide you. Okay. So this CEP I think so is not more is not difficult. This is just the lab session too, and CEP will you will also cover the CEP. So it's up to you. If but in the end you will show me this report like this paper. You will show and we will try to submit it in conference paper, or we will try in journal paper. Funding I will arrange and we will try to journal paper. If the standard is not at that level, no problem. We submit in any conference. Okay. So this CEP also belongs
you can see CV will also be updated with one paper. So this is the CEP, okay? And you can see here the CEP. You can download this paper. I also upload this paper on the website, and in the heading in the folder of CEP folder, separate folder CEP is there, and on in the Google Drive data, and there this paper is already there. So you can see, you can read this one if you want. For example, this is you can see this is the turbine, Francis turbine, and this paper, the formulas, derivations, and then there are graphs and tables, data which is taken from that. This is conclusion, simple. So these are the 7 pages, one page, 2 pages references, and the remaining 5 pages. So this is not difficult. So if anyone willing, so tell me. Okay, this one was first CV. Okay, the second CV is second CP. I also have to directly open the Google Drive. Complex problem, yes. Here you can see this is the complex problem. This CP you can open from the website. Okay, हैं? एक ही फोल्डर है यार, CEP का फोल्डर जैसे एक ही फोल्डर है, वन लिंक है उसमें वेबसाइट में, कोई एक जो है ना, एनी वन कैन शेयर दैट लिंक विद अदर्स, ओके, व्हाट्सएप. सो उसी लिंक के अंदर लैब वन के अंदर मैंने वो एक ही लिंक दिया, उसी में डाटा अपलोड करूंगा, ठीक है, इजी हो जाएगा. उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ सीईपी का फोल्डर होगा, सीईपी पे क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगी, आपको तो डायरेक्ट ही ओपन कर लेना ऑनलाइन, मैंने भी ओपन किया डायरेक्ट. ये अब मेरे पीडीएफ मेरे पास नहीं है अभी. सो यू कैन सी हियर दैट हियर the PLOs or engineering attributes are old, so we will update this. This is the actually this problem we are also assigned to your seniors 2K18 session. Okay, so also to you, no problem. So here you can see to design the objective is to design the hydropower plant using different head conditions. So this is the objective. And similarly, the previous first CEP you can see that we can take the heading, for example, this lab 2 heading in the website. But lab 2 is perform experiment for the design and operation of Francis turbine or variable loads. This is the tentative. This is the title for our today's lab. But in CEP we can change the title, no problem. We can improve that title later on, no problem. Based on our data, we can change this title. So here also to design hydropower plant using different head conditions. So here you can see ये वीडियो प्राइवेट असल में मैं सैटरडे की शेड्यूल की है, वो सैटरडे या संडे को अपलोड होगी ना, तो वो कोई नहीं, खैर वो आपकी सैटरडे को हो जाएगी. तो अब इसमें देखें, ये लैब वन के नीचे ना, ये जो डाउनलोड ऑल पीडीएफ डाटा आ रहा है ना, ये लैब वन के नीचे, इस पे क्लिक करेंगे ना, ये ओपन. अच्छा, इसके अंदर देखें तो ये देखें सीईपी प्रपोजल्स, एवेल्युएशन, लैब इंट्रो 1, लैब 2 का डाटा इसमें, पीजी मैनुअल, स्टूडेंट्स मैनुअल, ऑल मैनुअल्स आर देयर, ठीक है. उसके अंदर एक मैंने वन मैनुअल already your seniors 2K18 session manual, complete manual also uploaded PDF of that manual just for you guys. So you can see here CEP, when you click CEP, this is the paper on experiment on process turbine which I am talking about, the first CEP, and then this one is complex PG. This is what I am discussing right now. Okay, so you can see here to design hydropower plant using different head conditions. So here you can see design and development. So you will design this. This is mathematics. You will design how to, for example, we have the water tank. You can take this practical scenario for this hydropower plant design. How to take the practical scenario? For example, you can take the water tank. We have the water storage tank in UTEXLA. So you can take that example. For example, we are, you say, we use the water for gardening or something like that. So you can, for example, that height is also available. Tank is at the height of it. You can see head is available. Flow is also there. If you will, for example, you can decide. You can propose, for example, you can propose that you can propose to UET that if you want to use water, but why not to use water at one instant? For example, you are using water at this time for 15 minutes, then you are using water for next 2 hours. After 2 hours, again you are using for 15 minutes. Why you are you can say this? Why not to manage this water? For example, in 24 hours you use water, for example, total 2 hours. So why not to use 2 hours at the same time? Got my point?
यानी वो जो पानी आपने यूज करना है, वो जो आप कर रहे हैं कि पानी कभी 15 मिनट इधर किया, कभी 10 मिनट उधर किया, वो आप उसका एक टाइम रख लें कि 24 घंटों में हमने ये 2 घंटे फिक्स हैं कि जो टोटल टाइम आप इस 2 घंटों में वी विल कंपनसेट दिस वाटर, यानी वाटर जो रिक्वायरमेंट्स, सो 2 आवर्स में हम करें। वो जो 2 घंटे होंगे उसमें आप डिजाइन कर लें ये हाइड्रो पावर प्लांट के वी विल यूज दी अ स्मॉल हाइड्रो टर्बाइन देयर, यू कैन प्रपोज इट and you can calculate. This is just the calculation. You will calculate, for example, this head available and its flow rate will be this one, and then you will find okay, this energy is this kilowatt, for example, dash kilowatt energy is available from this if you will run this for 2 hours. Okay, so that energy can be utilized in our local in university for the load. Okay, so this is the proposal. So you can take this scenario of your Tesla, or you can take for different ads because different ads. Otherwise, you can also take the scenario, for example, in this Gangu canal. You see this canal which is near our university, passing. As you can see here, if you will follow this canal, okay, just follow this water, and you will see there are 3 heads or 4 heads available. Small heads available. Small mean small, but small heads mean Kaplan turbine we can use for small heads. For medium heads, you can use Francis turbine, and for large heads, you can use Pelton turbine. So if the head is small, for example, 10, 15 meter or less than that, so Kaplan turbine is feasible for that. And I hope that in Modamradu, which we will visit shortly, maybe next week we'll visit, so that is, I think so, Kaplan turbine, because head is less than 10 meters, 10, 15 meters like that in this range. So if the head is available for the 400, 500, 600 meter, so you can use the Francis turbine which we are discussing today. And if more, for example, thousands meter head is available, so Pelton turbine is there, 1000, 1100 like that. So approximation that. Pelton for high head is Pelton turbine. For high head लेस कोई फिक्स नहीं है, मैं कई जगह देखा है उन्होंने ना थोड़ा सा वेरी, दिस वेरिएशन ओके, तो कोई इसका वो ना बना लेना कोई, समझ रहे? बस ये है कि आप समझे कि हाई हेड जितना भी हो 1000, 1200 इस तरह की रेंज है, 900 भी हो जाए तो वो हाई है, समझ रहे हैं? और 500, 600, 400 मीटर, दिस इज मीडियम हेड. सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल तरबेला का, चाइना का तरबेला का, हमारा तरबेला डैम की कितना हेड है? 160 है कितने? अच्छा 160 है, हाँ यस, फ्रांसिस का रहे हैं आप, फ्रांसिस 60% ग्लोबल हाइड्रो जो है फ्रांसिस टर्बाइन लगती है, मीडियम है, ज्यादातर तरबेला जितने भी डैम होंगे फ्रांसिस ही होगी, ठीक है, क्योंकि मीडियम हेड होता है हमारे पास, ना लो ना हाई. अब तरबेला में मेरे ख्याल में आप गूगल करें जरा, तरबेला में मेरे ख्याल में हेड है कुछ 160, 70 कितना अजीम, जरा चेक करें. और चाइना में जो 3 गाड़ी सबसे बड़ा डैम है उसका भी 180 मीटर कितना है, देखिए ना, कोई ढूंढ के बताएं, थोड़ा एक्टिव रहे तो उसका भी हम आखिर में आपको क्रेडिट करेंगे ना. किसका मीटर में कितना होगा, 3 से डिवाइड करें, 100, हाँ 160 तरबेला का हेड है, ठीक है, तो फ्रांसिस टर्बाइन लगेगी. देखिए ना, अब 400, 500 में कह रहा था, लेकिन 150 में भी वो है, क्योंकि 10, 12, 15 मीटर जो है दिस इज लो हेड, इससे ऊपर अब 100 में चला जाए, 200 में, वो फ्रांसिस में चला जाएगा, ठीक है. अब वो हम मोटा बरादू की देखेंगे टर्बाइन, क्योंकि हेड जो है ना उसका मेरे ख्याल में वो कैप्लन ही होगी, ठीक है, वो उधर लिखा भी अख्तर साहब ने वो लगाई है, वो चेक करेंगे हेड के हिसाब से ना. तो अच्छा, उसके बाद उसका थ्री गार्जियस डैम जो है चाइना का, उसका कितना हेड है? हमारा 160 हो गया, उनका 180, 185 होगा, देखे जरा कितना है. थ्री गार्जियस डैम सबसे बड़ा डैम है ना चाइना का, मतलब कि हाइड्रो ही है. 130 मीटर, 130, 130 थ्री गार्जियस डैम वाटर हेड 130 मीटर है, देखे ना, तरबेला से कम है ये इसका, तो उधर भी फ्रांसिस ही होगी, समझ. पेल्टन तो हाई हेड के लिए होगी, थाउजेंड्स में, या मतलब ये थ्योरी में आपको बताया उन्होंने इस लेक्चर में? क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं 15 से कितना होता है, 15 से 15 से 30 मीटर लो है, 15 से 30 मीटर मीडियम है. अच्छा, हाई कितना है? और लो जो है 15 से नीचे है.
नहीं तो फिर वो फ्रांसिस लगाई हुई है हमने, त्रिपेला भी 160 मीटर है, तो आपका तो उधर ही गलत हो गया, इतना नहीं है। मैं अभी वही दिखाने लगा था, ये असल में लेक्चर का था, तो लेक्चर फिर आपको टीचर पढ़ाएंगे तो आप टीचर ही पढ़ाएंगे। मैं असल में इस लेक्चर में कुछ डाटा लिया हुआ था, तो आई विल ट्राई टू शो यू द कंपैरिजन ऑफ थ्री टर्बाइंस। ये देखिए आप, ये अब मैं हाई हेड का लिखा हुआ है 100 मीटर एंड अबव, सही है। आती चीज चेंज हो जाती है और मीडियम हेड है 30 से 100 मीटर, 30 से 100 मीटर, और लो हेड है 25 से 80 मीटर, समझ रहे हैं ना, 25 से 80। तो मेरे ख्याल में ये डाटा आप जो है ना, वो मैंने कोशिश तो की ऑथेंटिक लेने की, तो लेकिन आप और भी लेंगे, ये चीज पहले मुझे वेरी मिला है, लेकिन बस जेल में रखेंगे मीडियम फ्रांसिस है, लो ये है। एक डाटा मेरे पास ये था, मीडियम क्या था, 30 से 100 मीटर है, और हाई जो है 100 मीटर से अबव है, और लो हेड जो है 25 से, लेकिन ये इससे वो बनता नहीं है। अब तपेला का हमारा 160 मीटर है ना, तो ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। बहरहाल आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये थोड़ा सा हर किताब में, हर लिटरेचर में थोड़ा सा ये आगे पीछे कर देते हैं। तो आप वैसे जो नॉर्मली मैं जो इसको जो ओवरऑल असेसमेंट किया ना सारा डाटा लेने के बाद, वो बल्कि मैंने इधर ये जो आपको व्हाइट बोर्ड की पिक्चर भेजी है, उसमें मैंने वो सबका असेसमेंट करके डाला हुआ है, कई जगह से देख के ना। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने आपको भेजी है ना एक तस्वीर जो व्हाइट बोर्ड की है, ये देखें व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये ऐसे ही है ना, ये देखें। इसमें मैंने जो है ना लिखा, ये मैंने डिफरेंट जगह से लिया था, तो देखें पैल्टन का हाई हेड है ना, तो ये देखें 300 से 4000 मीटर, एक जगह पे ये था 300 to 4000 मीटर हाई हेड को कंसीडर करते हैं, या ये दूसरी जगह था 250 to 1000 मीटर। इसका हाँ, हाँ बस थ्योरी में क्या लगाया हमने, थ्योरी में आपको जो टीचर ने पढ़ाया वो है 500 से, 500 से, अच्छा हाई हेड है 500 से 1700, ठीक है, हाई हेड, ठीक है। चलिए ये भी लिख लेते हैं, ये भी ऐड कर देते हैं, सही है, ये डिफरेंट डाटा है। मकसद आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हाई हेड कितना है। तो जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे बस अब ये से तो ऊपर चला गया तो अब मैं फ्रांस से लगा ही नहीं सकता। ये कितना है, ये हाई हेड 500 से 1700 मीटर, ठीक है, और 70 से 500, ठीक है, और 70 से लेस, अच्छा ठीक है, लेस देन 70 जो है वो लो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये डाटा भी है जो आपके सामने पढ़ाया है, हाई हेड जो है 500 से 1700 मीटर है, और उधर मैं देखूं तो मैंने लिखा था 300 से 4000 मीटर या 250 से 1000 मीटर, ठीक है। बस ये रेंज है, आप इससे अंदाजा लगा लें। अच्छा दूसरी इन्होंने मीडियम कौन सी सर वाली ना, ये बन रहा है ना, बस ये फिर उनको ठीक है उनकी। अच्छा जो फ्रांस मीडियम उन्होंने लिखवाई है वो 70 से 500 मीटर है, जो मैंने लिखी हुई है इधर 40 से 600 है, 45 से 450 है, और 10 से 700 है, और एक जगह 60 से 250 भी है, और 45 से 400 मीटर भी है। ये डिफरेंट जगह से मैंने ली थी, लेकिन आप एक ही फॉलो कर लें, सर वाले कर लें, चले ये ठीक है, ये मेरे ख्याल में उसी रेंज में आता है। 70 से 500 मीटर जो है वो मीडियम हो गया, और लेस देन 70 आप देखें, मैंने कैप्लन का लिखा है 2 से 25 मीटर या 10 से 70, हाँ वो सर ने भी 70 ही लिखा है, 10 से 70 या 2 से 25 मीटर, ये दो जगह। तो बस ये सर वाला ठीक है, 500 से 1700 मीटर ये आप रख लें, यानी अबव 500 रख लें, बस 500 से अबव हाई हेड है, और 70 से 500 मीडियम हेड है, और लेस देन 70 या इजी भी हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 70 जो है वो आपका लो हेड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा बात कहाँ से चली थी भला हमारी, अच्छा हाँ सीपी हम देख रहे थे, असल में ये हाइड्रो पावर प्लांट की बात हो रही थी। तो सीपी के अंदर आप देखें तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये पीएलओ में चेंज करूंगा, दीज पीएलओस आर ओल्ड पीएलओस, ओके, रिवाइज पीएलओस आई विल अपडेट दिस, बट यू कैन सी द थीम ऑफ द सीपी विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, हाइड्रो डिजाइन। सो ओके, पावर जनरेशन डोमेन इज पावर जनरेशन, ओके, कंस्ट्रेंट्स क्या है, द प्रोजेक्ट शुड मीट द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स, these are the constraints. How to select the location, you will you will include this constraint, how to select the location for hydropower plant. The first main criteria is how to select the location, क्योंकि कुछ जगह पे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसी है ना, फ्रांस में, यूके, पुरानी बात है,
तो सिलेक्शन वाज नॉट गुड फॉर द हाइड्रो पावर प्लांट, सिलेक्शन वाज नॉट गुड। सो वो आया तो बंदे की डेथ भी हुई और वो सिस्टम हुआ। जिस तरह अब हमारे तो चलो वैसे ही सैलाब है ना, हमारा तो बलूचिस्तान उधर सारे कई डैम टूट गए ना, तो हो सकता है हमारी सिलेक्शन ही गलत हो। अब रिपोर्ट आएगी सैलाब के बाद तो हो सकता है वो पता चले कि ये इन्होंने बनाया ही गलत जगह पे था, समझ रहे हैं? लेकिन हमारा तो मसला और भी बन गया। हाउ टू सिलेक्ट द लोकेशन, ठीक है। एंड देन हाउ लॉन्ग इज द एरिया ऑफ कंप्लीट पावर प्लांट। सो फॉर एग्जांपल यू आर डिजाइनिंग फॉर एग्जांपल 100 किलोवाट, okay, and or 50 kilowatt or 10 kilowatt for example. So how long is the area required? So you will, this will also be the part of your CEP, complex engineering. This is complex engineering problem, okay. And then types of powerhouse structure you choose and why. So powerhouse structure, for example, run of river, the feasibility is run of river, pumped storage, or dam, reservoir, micro, eco hydro, which category it will fall, like that. So you will also powerhouse and Francis turbine, which turbine you will select, like that. So this detailed study will be part of this third constraint. And fourth one, how to design penstocks and surge tanks. So penstock and surge tank, how you will design penstock and surge tank, ठीक है, उसकी complete designing भी आएगी. Then type of turbine used and why. Type of turbine used and why. Which type and use and why you use. Elaborate the design constraints of turbine. So turbine के जो design constraints है उनको भी discuss करेंगे, ये discuss turbine के जो constraints है, ठीक है, तो उसको डिजाइन करना है तो उसमें क्या क्या constraint. अच्छा, उसके बाद how to control flow rate of water in order to achieve maximum efficiency. Yes, today we also discuss, for example, in Francis turbine, for example, there are wicket gates. One part of the turbine, there are many parts, different parts. One part is wicket gate. Wicket part is actually two parts: stay vanes and guide vanes. Stay vanes is fixed vanes, but guide vanes you can change it, and you can also change the flow, and you can adjust the efficiency. Yani you can achieve maximum efficiency with the help of guide vanes. So guide vanes क्या है? Again ये white board वाली तस्वीर खोलें जरा, white board वाली खोलिए। ये जो white board वाली तस्वीर है ओपन की है, ये जो इस तरह की white board की है आपको शेयर की है, you can see here that different parts. Spiral casing, this is the spiral casing. This spiral casing also is second name is scroll casing or volute. We also volute, we can say volute or scroll casing or spiral casing because it's spiral like that, just to get the maximum energy from the water. And then are the wicket gates. In wicket gates, one part is stay vanes, that is fixed, we cannot change. And what's the function of stay vanes? It removes the water swirls. Swirls क्या है? वाटर्स के अंदर जो वो होती है ना, उनको ये रिमूव कर देता है, मतलब वो जरा स्मूथ कर देता है वाटर को, ठीक है, लीनियर कर देता है फ्लो. अच्छा, उसके बाद ये गाइड वेन्स है दूसरे, विकेट गेट का दूसरा पार्ट, दैट इज गाइड वेन्स. एंड दैट गाइड वेन्स एक्चुअली you can see here that these are adjustable, we can adjust it, ठीक है, we can adjust it, okay. So today we also adjust, so you can change the angle, the water is striking the runner with an angle, so you can change the angle with these guide vanes. So today we will perform the practical, and that guide vanes are actually manually, but in civil department next we will go and there we'll see this Francis turbine. Their guide vanes are controlled by a governor, and that governor is actually mechanical governor. Old governor, mechanical, okay. But new governors, okay, electronics and you can say control is more sophisticated. But that governor is, so you can see that governor is actually sensing the speed to fix the speed, to maintain the speed. If speed is less, governor will open the guide vanes so that the flow is more, and you can see get the more efficiency, like that. So you can control the output power. Efficiency is actually output power or divided by input power. If flow is constant, so you can change the output power, or this is the adjustment of the guide vanes. How to in this way you can control the flow also, and the angle at which the water will striking the runner, like that. So guide vanes. So बात कहाँ से चली थी? Complex engineering problem से, ठीक है. तो ये गाइड वेन्स थे, और गाइड वेन्स के बाद नेक्स्ट पार्ट है इज रनर.
तो रनर आप देखें तो रनर वो है जो भी टरबाइन के अंदर द पार्ट मूविंग पार्ट इज एक्चुअली रनर, एंड इस मूविंग पार्ट के अंदर इसके ऊपर ही रनर के ऊपर ही एक पार्ट होता है, वो भी रनर, उसको कहते हैं ब्लेड्स, इसके ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ब्लेड्स। अब ब्लेड्स अगर आप देखें तो अगर आपकी फ्रांसिस टरबाइन है तो इसके ब्लेड्स आप देखेंगे 3, अभी जो हम देखेंगे उसके 3 है, वरना 3 से 6 इस तरह इतने होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो आपकी फ्रांसिस टरबाइन आज वाली है, इसकी देखो, ये कैपलन के 3 का फ्रांसिस है, ये देखेंगे तो इसके भी इसी तरह के 7 8 9 इस तरह होंगे, काउंट कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह फिर जो बेल्टन टरबाइन है उसके काउंट किए तो वो मैं 17 थे, वो भी डिपेंड करता है, बड़ी है तो वो उस हिसाब से। तो पेल्टन के वो विकेट गेट वो होते हैं, क्या कहते हैं इसको, बकेट्स। ये पेल्टन बल्कि इधर ही पड़ी है, जब पेल्टन करवानी है तो मुझे याद कराना, मशीन लैब में जाएंगे वहां एक बड़ी है, बल्कि फ्रांसिस भी बढ़िया, अभी जाते हुए मुझे याद कराना मशीन लैब में फ्रांसिस भी देख के जाएंगे, ठीक है जी। मैकेनिकल जाना है अभी, असल में हमारा मेन मैकेनिकल है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, ये तो आ गया हमारा elaborate the design. How to we are discussing second CEP, how to control flow rate of water in order to achieve maximum efficiency. तो फ्लो रेट कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी आपका पार्ट होगा। विच टाइप ऑफ जनरेटर शुड अटैच टू टर्बाइन, वाई, विच जनरेटर, and similarly elaborate the design constraints of generator, either single phase or three phase. You are using single phase or three phase, but in today's workbench you can see we are using DC generator, but normally not DC, synchronous generator, three phase AC generator or alternator, or you can say three phase AC generator or synchronous generator we are using for different hydro energy, for the generation of hydropower. Type of transformer used, which type of transformer you will use, which voltage level you have, and which type of transformer you use. If 3 single phase transformer, then why? If you are using 3 single phase transformers, then why? And if 3 phase transformer, why? If you are using 3 phase transformer, and you can also use 3 single phase transformers to perform the function of 3 phase transformer, okay, this is also possible, but why, what is the reason behind it? These are the 11 constraints. You can add, for example, more constraints. For example, you have any question and you again have the answers, you can add 12 constraints and like that. Deliverables, soft copy of the file, you will complete that report, and soft copy is required. Project report in hard copy, yes. PowerPoint presentation. In the end, for CP, every member of the group will present in the PowerPoint, okay. And evaluation grading क्या है, literature review is 10 marks, for example 10%, 10 marks this, designing, whole designing 20, report formatting 10, presentation 10, like that 40, and we will just convert it 40 into 20 marks, solid marks, like that. So in this way, this is the second CEP. So anyone who want to choose first CEP or second CEP, just inform me. अच्छा, अब आप देखें आज का प्रैक्टिकल हमारा है जिसका टाइटल आपने लेटेस्ट रखना है। लेटेस्ट टाइटल, फॉर द लेटेस्ट टाइटल जस्ट यू विल सी द वेबसाइट, एंड इन द वेबसाइट आई विल show you the, I will write the latest, because here perform I have taken from Bloom taxonomy P3, I think so, P3 or A2, because these are the taxonomy level P3 A2, these two levels we are using. So I take this took this perform experiment for the design and operation of Francis turbine. Okay, so now you can see here that in this whiteboard picture, just open this one. Now today our agenda is simple, only one point agenda, that we will fix the flow. Flow mean input power, because turbine has input hydropower and output is mechanical power. Got the point? First is turbine, water is flowing through the turbine, hydro turbine input, output is mechanical power. So efficiency is actually output over input. Mechanical power, output mechanical power divided by input hydro power will get the efficiency. This is what the agenda we have. Up for this, we have to fix one part. Flow is constant, mean input flow we will fix it, we will not change the flow, and we will perform the experiment on variable loads. Will change the load. Changing load mean output power is changing, but input power is fixed. So input power is fixed, output power is changing based on the load. So we'll apply the loads. In the start, you will see the power is increasing because load is less, power is increasing. But one point will come that again you will apply the load, so you see the power is decreasing.
that point, the maximum point, that is actually we want to know that point of this turbine. That is actually a optimum point. At that point you can run that turbine. Okay, that is the maximum. It means that point is actually the maximum efficiency, and that maximum efficiency mean minimum losses. So उस maximum efficiency में हमने इसको turbine में चलाना है. इसीलिए being an engineer, if you have the Francis turbine for example, you want to operate that Francis turbine, so you need to know that optimum point actually. If you first know that optimum point, today's experiment is just to know that point, optimum point. Optimum point, or you can say the maximum efficiency point at which we want to operate that Francis turbine. So similarly, any turbine, you will first want to investigate the optimum point or maximum efficiency point. At that will be the point where you will apply the load. Okay, so you will get the maximum efficiency. So अब जो फ्रांसिस टर्बाइन है उसकी एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा होती है कैप्लन और उससे पेल्टन से ज्यादा होती है. और इसी तरह इसका जो हेड है डेफिनेटली मीडियम हेड के लिए अवेलेबल है. मीडियम, तो मीडियम हमने डिसाइड किया कि 70 से 500 मीटर है मीडियम. और इसी तरह जो आपका फ्रांसिस मीडियम हेड है और फ्लो रेट भी इसका मीडियम ही, फ्लो रेट भी मीडियम. और जो आपका क्या नाम है, जो दूसरी टर्बाइन है जो पेल्टन है उसका हाई हेड है, लो फ्लो रेट है, यानी क्यू लो होगा और हाई हेड होगा. ठीक है. और जो दूसरी है कैप्लन टर्बाइन, उसका हेड क्या था, सबसे कम था, फ्लो सबसे ज्यादा. इस तरह है ये इनकी कैटेगरीज. ठीक है, ये ग्राफ भी बनाया हुआ है. मतलब जो फ्रांसिस टर्बाइन है वो मीडियम हेड, मीडियम फ्लो रेट. फ्लो रेट क्या है कि ये पानी नहर से गुजर रहा है ना इधर से, तो इस पॉइंट पे 1 सेकंड में कितने मीटर क्यूब पानी गुजरेगा, दिस इज फ्लो रेट. ठीक है, किसी एक पॉइंट. तो वो फ्लो रेट चाहिए होता है अपने पेल्टन को, सबसे कम चाहिए, लेकिन हेड सबसे ज्यादा है. फ्रांसिस में मीडियम हेड मीडियम फ्लो रेट, कैप्लन में हाई फ्लो रेट लो हेड. तो ये आपकी इसकी कैटेगरी. अब इसके अंदर ये भी है, दूसरा है कि इसका फ्लो क्या है. अच्छा, इसमें जब पानी इन हो जाता है टर्बाइन में, तो ये स्पाइरल केसिंग में गया, उसके बाद गाइड वेन से होता हुआ, गाइड वेन से एडजस्ट कर सकते हैं उसके फ्लो को, एंगल को, और उसके बाद फिर रनर को मूव करवाएगा. रनर को मूव करवा के ये पानी विल बी आउट, एंड इट विल बी आउट थ्रू ड्राफ्ट ट्यूब. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब. ओके, सो दैट ड्राफ्ट ट्यूब हम क्यों बनाते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब इज जस्ट, you can see the draft tube area is increasing. I mean, in the start the draft tube fixed with the turbine, the area is small, but as the draft tube will go away, you can see the area is increasing, uh, just to you can say compensate the problem of cavitation. Cavitation means bubbling. You can see in the output, you will today you will also see when you will change the speed, there is something bubbling. So that bubbling effect you can remove, that is called cavitation. Okay, so draft tube is designed like that, but here today you will see that draft tube is same area, but practically draft tube like this. अच्छा, अब आप इसके अंदर जो वाटर इन होता है, जैसे अब टर्बाइन चल रही है ना एक्सिस पे, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ एक्सिस है, इस पे टर्बाइन रोटेट कर रही है. तो जो फ्रांसिस टर्बाइन है इसमें जो पानी इन होता है ना वो वर्टिकली, यानी एक्सिस के वर्टिकली इन होता है, और उसके बाद एक्सिस के थ्रू आउट हो जाता है, यानी एक्सिस के पैरेलल में आउट हो जाता है और वर्टिकली इन होता है. ये वर्टिकली इन हो तो इसको कहते हैं रेडियल फ्लो. यानी वर्टिकली जो आपका एक्सिस, कोई भी टर्बाइन देखें, आप देखें टर्बाइन का एक्सिस इस तरह है, इस तरह मूव, यानी एक्सिस ये इसके इस तरह मूव करेगी ना, और पानी अगर इस तरह इन हो रहा है इसमें बिल्कुल वर्टिकली, यू कैन से दिस इज रेडियल इनफ्लो टर्बाइन. सो फ्लो इनफ्लो इज रेडियल, एंड पानी फिर उसके एक्सिस के साथ आउट हो रहा है. बस देखना कि आउट कैसे हो रहा है, उसको हो सकता है इधर से आउट एक्सिस के साथ और फिर उसके बाद उसको टिल्ट किया और नीचे, लेकिन आपने सिर्फ यही देखना कि आउट कैसे हो रहा है. आगे तो जिधर मर्जी ले जाना है. आउट अगर एक्सिस के थ्रू हो रहा है तो इट मींस दैट इज एक्सियल फ्लो, आउट फ्लो इज एक्सियल. तो इन फ्रांसिस टर्बाइन inflow is radial and outflow is axial, but for Kaplan turbine inflow and outflow same are axial होते हैं. ठीक है, कैप्लन में
कैपलन में इधर से पानी आता है, रनर को घुमा के उधर से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, जो तीसरी पेल्टन टरबाइन है उसमें टोटली दूसरा होता है, यानी उसको क्या कहते हैं, रेडियल इनफ्लो और रेडियल आउटफ्लो, ये पेल्टन में होगा, ठीक है। पेल्टन और कैपलन तो आज उनको भी देखेंगे, ठीक। अच्छा, इसका मतलब है कि जो फ्रांसिस है इसके अंदर जरा दोनों ही फ्लो है, इट विल दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। सो फ्रांसिस टरबाइन इज एक्चुअली मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है। अच्छा, अब टरबाइन की भी दो टाइप्स है ना, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, आपने पढ़ा होगा। अब इंपल्स टरबाइन, ये जो पेल्टन टरबाइन है ये इंपल्स टरबाइन है और जो दूसरी है दोनों फ्रांसिस और कैपलन, ये रिएक्शन टरबाइन है, ठीक। अच्छा, बाकी जो है ना हमने लासेस और इसके फार्मूले भी इधर कुछ लिखे हुए हैं। अब हम एक फार्मूले देखते हैं और इसको एंड करते हैं और चलते हैं। अब फार्मूले देखें, एफिशिएंसी निकालनी है, मैंने कहा कि फ्लो हमने फिक्स रखना है, वो हम वहां जाके देखेंगे फ्लो कैसे। फ्लो फिक्स रख दिया यानी इनपुट फिक्स रख दिया, अब आउटपुट पे वेरिएबल लोड डालेंगे, लोड डाल के हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ क्या होगा, आरपीएम, यानी जो टरबाइन के आरपीएम है, आरपीएम वर्सेस एफिशिएंसी ग्राफ बनेगा, ये हमारा मेन पॉइंट है। आरपीएम वर्सेस एफिशिएंसी, ये ग्राफ बनाना है आज का बस। और वो उस ग्राफ में आप देखेंगे एफिशिएंसी इस तरह जा रही है ऊपर, एक मैक्सिमम पॉइंट पे आई फिर नीचे चलेगी, वो जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ढूंढना है आज हमें। वो मैक्सिमम पॉइंट पे देखेंगे कि कितने आरपीएम पे चल रही है वो टरबाइन, और उस मैक्सिमम पे हम ये भी एक दूसरे ग्राफ में देखना चाह रहे हैं कि आउटपुट पावर कितनी है हमारी जनरेटर की, यानी इलेक्ट्रिकल लोड कितना है, असल में तो हमारा इलेक्ट्रिकल है ना। तो एफिशिएंसी हम टरबाइन की देख रहे हैं, ये ध्यान में रखें। टरबाइन की एफिशिएंसी क्या है, टरबाइन की आउटपुट मैकेनिकल पावर और इनपुट हाइड्रो पावर। अदरवाइज पूरे सिस्टम की अगर इस हाइड्रो पावर प्लांट की हम एफिशिएंसी देखें तो आउटपुट इसकी इलेक्ट्रिकल आती है, जनरेटर की आउटपुट इलेक्ट्रिकल डिवाइड बाय इनपुट हाइड्रो पावर, ये पूरे पूरे सिस्टम की आ जाएगी। या फिर आप जनरेटर की देखना चाहें तो आउटपुट जनरेटर की इलेक्ट्रिकल डिवाइड बाय इनपुट जनरेटर की, वही जो टरबाइन की आउटपुट थी वो इसकी इनपुट है मैकेनिकल। तो अगर टरबाइन जनरेटर की पूछ रहे एफिशिएंसी, अगर कोई पूछेगा आज का एक्सपेरिमेंट किया तो बताएं जनरेटर की एफिशिएंसी क्या निकालेंगे, तो आप यही फार्मूला नहीं बता देंगे, कहेंगे उसके लिए है कि उसकी आउटपुट पावर जनरेटर की इलेक्ट्रिकल, इस केस में जनरेटर चूंकि डीसी है तो नो पावर फैक्टर, वी आई, सिंपल वी आई, वोल्टेज एंड करंट, यू विल गेट द पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मैकेनिकल यू कैन सी इज टार्क इनटू ओमेगा, torque into omega. So you also calculate this power from machine 11 third semester. So torque into omega. So you can see omega is 2 pi n over 60. तो अब आप देखें 2 pi n और 60 और साथ टार्क आ गया, तो ये आ गया 2 pi n t और 60। ये चैपमैन में ये प्रूफ भी है, ये फार्मूला, ये डेरिवेशन। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर स्पीड और टार्क आ रहा है, ऐसी है ना, n स्पीड इज आरपीएम, सो वहां स्पीड सेंसर लगा होगा, उससे हम आरपीएम निकाल लें। और मशीन लैब है, आपको छोटा सा डीसी जनरेटर, टेको जनरेटर लगा हुआ था हर मशीन में, इधर जो इलेक्ट्रिकल मशीन लैब है वो वोल्टेज में कन्वर्ट होती थी, तो अब आरपीएम को वोल्टेज में कन्वर्ट करके इधर देख लेते, पता नहीं याद आया कि नहीं, किसको याद है कि टेको जनरेटर में लगा हुआ था शाफ्ट के साथ, शाफ्ट घूमती थी, वो डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर था। वो जनरेटर ज्यादा जब मूव करेगा तो ज्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल उसका हमने कन्वर्टर दिया 1000 वोल्ट 1000 आरपीएम स्लैश 7 वोल्ट, इट मीन अगर 1000 आरपीएम पे चलेगी तो इसका मतलब है कि उसके 7 वोल्ट होंगे जनरेटर। इसी तरह आप वोल्ट से आप कन्वर्ट करते थे, तो अगर 10 वोल्ट है तो आप उस हिसाब से देख रहे हैं कि 1500 आरपीएम चल रहा है। लेकिन उधर हम क्या करेंगे, टेकोमीटर भी होता है, वैसे टेकोमीटर वो हम जब सिविल में जाएंगे तो इधर पड़ा था, अगर वो मिल गया तो उनके पास भी है, तो वो टेकोमीटर से मेजर करेंगे। लेकिन आज इनके पास स्पीड सेंसर ही लगाया हुआ है, एडवांस है, स्पीड सेंसर लगा हुआ है, उससे कंट्रोल पैनल पे डिजिटल डिस्प्ले में आपको रीडिंग आरपीएम मिलेगी, ठीक है। तो ये आरपीएम तो ऐसे आ गए हमारे टरबाइन के। अच्छा, उसके बाद जो टार्क है, टार्क कैसे निकालेंगे, टार्क के लिए इधर मशीन लैब में कैसे निकालते थे टार्क, आर क्रॉस एफ था ना, आर क्रॉस एफ मीन आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ आप देखें तो डायनेमोमीटर लगा हुआ था मशीन लैब में, तो वो आप देखें तो उसका मोमेंट आर्म था जो कि 26 मीटर सेंटीमीटर था, या 0.26 मीटर करेंगे इसको, और फोर्स ऐसे लगती थी, वो स्केल आटा चक्की वाला स्केल नहीं होता, उसी तरह का लगा हुआ था, वो फोर्स उसको कैलिब्रेशन फोर्स किया हुआ है उसके स्केल न्यूटन में। अब वो उसको फोर्स लगती थी, जैसे ही आप लोड डालते थे डायनामोमीटर मूव करता था, फोर्स लगती थी, वो स्केल मूव करता था, न्यूटन में आ जाती थी, वो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय वो फिक्स था आर, क्योंकि 90 पे था, साइन 91 उसको खत्म हो गया आर एफ रेट, उससे आप निकालते थे न्यूटन मीटर टार्क। लेकिन इधर आज जो निकालेंगे वो आएगा, अब उनके पास लोड सेल है, लोड सेल से डायरेक्ट ही कंट्रोल पैनल में डिजिटल डिस्प्ले में उनका टार्क आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर, ठीक। तो टार्क हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, और जो स्पीड है
वो उनके वो स्पीड सेंसर लगा हुआ है। तो एक ही शाफ्ट पे सेंसर लगा दें, क्योंकि टरबाइन की और जनरेटर की शाफ्ट एक ही है ना, तो जनरेटर के आखिर में भी लगा दें शाफ्ट पे लगा हुआ है इधर, तो फिर भी कोई इशू नहीं, उस शाफ्ट तो एक ही स्पीड में मूव कर रही है, समझ। तो ये आपका हो जाएगा आपकी आउटपुट पावर होगी ना। आउटपुट में हमें दो पैरामीटर चाहिए, टार्क और स्पीड, ऐसी है ना। तो टार्क हम लोड सेल से निकालेंगे और स्पीड जो है वो हम उधर स्पीड सेंसर लगा हुआ है उसे, ठीक हो गया। आउटपुट पावर हमारी मैकेनिकल पावर मी फाइंड होगी। अच्छा, उसके बाद हमने इनपुट पावर निकाली। इनपुट पावर के लिए देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, पी गेज इनटू फ्लो रेट, यानी प्रेशर और जो गेज है वहां प्रेशर गेज है बनी हुई, प्रेशर गेज, उससे प्रेशर वाटर का फ्लो का प्रेशर पता चलता है, ठीक है। तो पी गेज इनटू फ्लो रेट, फ्लो रेट, ठीक है। तो प्रेशर और फ्लो रेट इससे हम निकालेंगे पी। इसके और भी फार्मूले आप देखें ना, यहाँ हमारे पास हेड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यार हम जब पीछे से ऑन करेंगे ना सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी पानी पीछे से मोटर चलाएंगे, असल सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जैसे घर में सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ना, उसके पीछे मोटर लगी होती है, इधर भी 3 फेज मोटर लगी हुई है, उसको आप चलाएंगे तो पंप चलेगा। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करेगा, टैंक से पानी निकाल के तो उस टरबाइन पे डालेगा, अब टरबाइन चलेगी। ये जो सिनेरियो है, ये रियल टाइम में क्या होगा, रियल टाइम में तो हेड अवेलेबल होगा ना यार पानी का, तो वो पानी उधर से गिरेगा, तो उधर टरबाइन या सेंट्रीफ्यूगल ये इसकी जरूरत नहीं होगी, ये समझ रहे हैं ना, सिर्फ टरबाइन पे डायरेक्ट पेन स्टार से गिरेगा। लेकिन इधर वो सूरत डिफरेंट है, इसलिए इधर पी गेज हमने निकाला है और फ्लो रेट। लेकिन अगर हेड अवेलेबल है तो ये देखिए हेड का फार्मूला आगे मैंने सारे रिलेट कर दिए हैं, ये 2-3 जगह पे लेंगे, तो आप उसके लिए हेड के लिए फिर आपको अवेलेबल हो। तो अब आप देखिए पी गेज जो है ये आपका दो प्रेशर्स का डिफरेंस है, इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर। चूंकि टरबाइन की इनपुट पावर निकाल रहे हैं तो हमें टरबाइन का प्रेशर लेना है, टरबाइन का, ठीक है। वहां प्रेशर आपको नीचे पंप का भी मिल रहा होगा, लेकिन चूंकि टरबाइन की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, इसकी पावर निकाल रहे हैं इनपुट, तो टरबाइन के एक शुरू में लगा हुआ है, यानी टरबाइन में पानी अंदर जाने से पहले यू विल सी देयर विल बी द प्रेशर गेज दैट विल शो द इनलेट प्रेशर, एंड जैसे टरबाइन से पानी आउट होने लगा वहां भी एक लगा होगा प्रेशर गेज, सो दैट विल बी द आउटलेट प्रेशर। तो डिफरेंस ऑफ द टू विल यू विल गेट द पी गेज, प्रेशर गेज, ओके। तो ये प्रेशर गेज आ गया। और फ्लो रेट क्या है, वहां फ्लो मीटर लगा होगा, फ्लो मीटर, वो मीटर क्यूब पर सेकंड में वो फ्लो, जैसी पानी उसमें से गुजर रहा है तो वो फ्लो रेट दे रहा है, तो वो भी आपको डिजिटल डिस्प्ले में मिल रहा है। तो ये दोनों आपको, ये दो मिले, दो पैरामीटर ये निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट पावर मिल जाएगी। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट एफिशिएंसी आ जाएगी, समझ रहे हैं। अब ये पैरामीटर, चूंकि लोड हम चेंज करेंगे, लोड पहले स्मॉल लोड ऑन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा इस लोड चेंज करते जाएंगे, तो आप देखेंगे इनपुट तो हमने फिक्स कर दी थी, फ्लो रेट फिक्स है, पीछे से सेंट्रीफ्यूगल पंप को एकदम चला दिया, उसके बाद हमने उसको फिक्स कर दिया स्पीड, और अब आउटपुट पावर हम चेंज होगी क्योंकि लोड के साथ, तो उससे हमारा एफिशिएंसी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखें, जब जहां एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, स्पीड वर्सेस एफिशिएंसी हमने ग्राफ बना लिया। अब मुझे ये बताएं कि दूसरा ग्राफ हमने बनाना है कि अब इलेक्ट्रिकल पावर, उस मैक्सिमम एफिशिएंसी हमने ये देखनी है कि इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है। उसके लिए क्या करेंगे, वही आरपीएम, टरबाइन के आरपीएम वर्सेस, अच्छा टरबाइन और जनरेटर के आरपीएम सेम ही होंगे, समझ रहे हैं ना, तो वो आरपीएम वर्सेस आउटपुट पावर, दैट विल बी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पावर। वो वोल्टेज और करंट आ रहा होगा, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपकी, अगर 3 फेज होती तो फिर 100 3 VI cos थीटा वो चक्कर और था, ठीक, एसी होती है। ये चूंकि डीसी है, जनरेटर लगा हुआ, फिर आपको, तो वो आपकी आउटपुट पावर लिखे, तो वो आप देखेंगे वो जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो मैक्सिमम उधर ही है जहां एफिशिएंसी मैक्सिमम थी। ये दो ग्राफ निकल आएंगे, यानी आरपीएम एक्स एक्सिस पे टरबाइन की आरपीएम और वाई एक्सिस पे टरबाइन की एफिशिएंसी, और दूसरा हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। दोनों का ग्राफ में आप देखेंगे जहां एफिशिएंसी मैक्सिमम है उधर ही इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मैक्सिमम, यानी जनरेटर की टरबाइन की कैपेसिटी है, उससे आगे आप लोड डालेंगे, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि लोड बढ़ रहा है तो आपका जितना मर्जी बढ़ाते जाए उसकी लिमिट है ना, एक जनरेटर पे आप मैक्सिमम लोड, तो ये उससे आपका पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बाकी ये फार्मूले कुछ और भी लिखे हुए हैं, इफ यू स्टिल नीड यू कैन रीड। एंड इसमें जो मैनुअल है, मैनुअल देखें तो ये पीजी लैब, ये जो पूरा मैनुअल है ना, उसमें वेबसाइट में मैंने सारे मैनुअल 14-15 जितने भी हैं उधर अपलोड कर, उसमें ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इसमें एक टाइटल हमने चेंज